Good morning, dear students. How are you all? Dear students, today we are going to see a new lesson, Amar and the ball. This is your lesson number 3. Do you know what is a ball? Yes, it is a plaything. Yes, dear students, it is a plaything with which every age group children like to play. There are many games that can be played with your ball. What are they? Let's try to check it out. Yes, basketball, cricket, one game that everybody likes, football, lawn tennis. So, these are the games that can be played with a ball. Yes, of course, the size of the ball varies. You know, balls also come in different forms. You can have a plastic ball, you can have a rubber ball, you can have a cork ball. So it depends from the game to game. And remember one thing, the ball is really bouncy. Do you know what is bouncy? When the ball goes up and down when you just give it a strike, isn't it? So the ball is bouncy. So today we are going to talk about the story of this bouncy ball, जो कि एक बॉय अमर के पास है. So we are going to discuss the story of Amar and his bouncy ball. So let's get started. Amar had an old ball. Amar के पास एक old ball थी. It is old and dirty. The ball was very old and dirty. लेकिन बच्चे अमर को वो बॉल के साथ प्ले करना ना बहुत अच्छा लगता था. He said, I will throw it in the dustbin. Amar threw the ball in the dustbin, but it bounced out of the bin and went bouncing along the street. अमर ने सोचा वो अपनी बॉल को ना डस्टबिन में थ्रो कर देता है, पर वो बॉल तो डस्टबिन से बाहर आ गई बाउंस कर कर, एंड इट स्टार्टेड बाउंसिंग अलोंग द स्ट्रीट. फिर बच्चे जब एक वो डॉग ने उस बॉल को देखा, डॉग ऑल्सो वेंट बिहाइंड द बॉल. अ डॉग चेस्ड द बॉल. चेस्ड का मतलब पीछे पीछे जाना, उस बॉल के पीछे पीछे जाना. बट इट बाउंस्ड ओवर अ ट्री. लेकिन वो बॉल इतनी बाउंसी बॉल थी एंड नेवर वांटेड टू गो इनटू द डस्टबिन, सो इट अगेन बाउंस्ड एंड इट बाउंस्ड ओवर द ट्री. ट्री के ऊपर से बाउंस कर गई. अ कैट वाज सिटिंग ऑन इट. बच्चे ट्री के ऊपर एक कैट थी. It jumped off the tree and ran after the ball. Now, after the dog, it was the cat who started running after the ball. But the ball went very fast. लेकिन वो बॉल इतनी फास्ट थी कि it kept on bouncing and bouncing, bouncing and bouncing. So, dear students, you know what happened next? The ball went on bouncing until it fell into a hole. After some time, after continuous bouncing, जब वो बॉल बाउंस करती गई, फिर वो एक होल में गिर गई, right? But again, the ball was quite lucky. Nobody wanted the ball to stay there. So, in the afternoon, a postman picked it up. बच्चे आपको पता है ना, who is a postman? A postman is a person who delivers the letters. So वो postman ने उस बॉल को उस होल से निकाला, पिक किया. He bounced it as he went along the street. और जैसे जैसे वो लेटर्स डिलीवर कर रहा था, वो उस बॉल को साथ साथ बाउंस कर रहा था. बच्चे इससे he was also enjoying delivering the letters, But the ball bounced away from the postman. लेकिन वो बॉल तो पोस्टमैन के फिर से बाउंस हो गई, दूर चले गई. इट बाउंस्ड अलोंग द स्ट्रीट एंड वेंट इनसाइड अ हाउस थ्रू अ विंडो. बाउंस करते करते एक स्ट्रीट में एक विंडो ओपन थी, वो उस विंडो से एक हाउस के अंदर चले गई. हुज हाउस वॉज इट? इट वॉज अमर्स विंडो. वो किसके हाउस की विंडो से अंदर आ गई थी? अमर के हाउस की विंडो. इसका मतलब पता है what happened? बॉल never wanted to go away from अमर. वो बॉल अमर से दूर नहीं जाना चाहती थी. So अमर was surprised. Surprised का मतलब एकदम हैरान रह जाना. So अमर was surprised when he saw the ball again. So अमर ने जब बॉल को दोबारा से देखा, he was really surprised.
This time he did not throw it in the bin. He washed it and cleaned it. So बच्चे, you should remember, आप लोगों को भी ऐसी ही कोई चीज़ों को डर्टी समझकर थ्रो नहीं कर देना चाहिए. You should keep your belongings to yourself because they are your good things. So ball was really a good thing possessed by Amar. सो बच्चे, उसने उसको अच्छी तरह से वॉश किया और क्लीन किया एंड ही टुक इट बैक टू द प्लेग्राउंड. हिज फ्रेंड रवि सॉ द बॉल एंड दे सेड, लेट अस प्ले विद द बॉल. ही सेड, व्हाट फन दे हैड. See, with the small thing that was lost to be thrown in the dustbin, then again it was lost, but see, again he regained it. बॉल उसी के पास रहना चाहती थी एंड विद दैट स्मॉल थिंग अगेन दे हैड अ लॉट ऑफ फन. दे प्लेड अ लॉट. So you also think you are not going to throw any of the thing unless and until you ask your parents. Is that clear? Okay, dear students, read this lesson once again. Bye.